Hello everyone, welcome to NetSpace India. Today we will learn how to deploy a virtual machine in NetSpace India Cloud Solutions. NetSpace India Cloud Solution के benefits ये है कि आपको per hour base पे अपने server का cost pay करना है. You don't have to pay for monthly, quarterly or yearly. आपको flat rate pay करना है depending upon your configuration. Virtual machine बनाने के benefits क्या होते हैं ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे और actually virtual machine को बनता कैसे है वो भी हम सीखेंगे. ठीक है. To create a VM, you'll need to visit server.netspaceindia.com. Once you're here, just enter your username and password. Once you're logged in, आपको ऐसा पैनल दिखाई देगा. Now over here you will see कि आपका बैलेंस कितना है because ये पूरा prepaid system है and how much you have already used. So currently we have used 56 hours, जो 200 रुपये के आसपास बना है. एंड करंटली कितने सर्वर्स ऑनलाइन हैं यहाँ पर ये दिखाएगा. एंड नाउ लेट्स टेक ए क्विक लुक. अभी जैसे ये सर्वर्स पहले से चल रहे हैं तो लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर. क्लिक ऑन मैनेज. नाउ दिस इज ए 4 GB मशीन. करंटली इतना यूज़ हो रहा है, ट्रैफिक कितना यूज़ हो रहा है, यू गेट इट हियर. एंड देन इफ यू वांट टू रीसेट द पासवर्ड, आप यहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं. बट क्विकली फॉर नाउ फॉर दिस डेमो लेट्स गो एंड बिल्ड द सर्वर्स. आपको जस्ट यहाँ पर क्रिएट सर्वर पे क्लिक करना है, आवरली पैकेज सेलेक्ट करना है, देन हैदराबाद. करंटली नेटस्पेस इंडिया हैदराबाद में सर्वर प्रोवाइड करता है, बट इन द फ्यूचर वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च इन नासिक, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया. सो विंडोज सर्वर बनाने के लिए वी नीड एटलीस्ट 4 GB मशीन. यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे. लास्ट द नेम ऑफ द सर्वर, आपको नेम सर्वर क्या चाहिए. Now for demo, test21.netspaceindia.com. You can select the time zone of the servers. Be aware this time zone का मतलब है कि सर्वर का टाइम जोन क्या होगा. ये सर्वर उस टाइम जोन पे नहीं होगा. Correct. Then select the operating system. Currently we are providing BYOL licenses, मतलब bring your own license in Windows. अगर आपका खुद का लाइसेंस है तो यू कैन डिप्लॉय इट. इफ यू डोंट हैव इट यू कैन बाय इट सेपरेटली फ्रॉम अस. यहाँ पर हम 2022 स्टैंडर्ड मशीन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. एडवांस में यू कैन ऑल्सो अनेबल VNC कनेक्शंस एंड आप प्राइमरी और सेकेंडरी DNS कौन सा यूज़ कर, बट यू डोंट हैव टू यूज़ ऑल दिस. आपको सिंपली इंस्टॉल योर विंडोज सर्वर, इंस्टॉल नाउ. इट विल टेक सम मिनट्स एंड इट विल सेंड द डिटेल्स ऑन द मेल. तब तक यू कैन टेक ए कॉफी ब्रेक. तो जब तक ये इंस्टॉल होता है आई विल जस्ट सिंपली एक्सप्लेन कि वर्चुअल मशीन्स होते क्या है, हाउ डज इट वर्क. वर्चुअल मशीन एक्चुअली एक मेन सर्वर्स के वर्चुअलाइजेशन पे होता है. तो सपोज आई हैव ए हार्डवेयर ऑफ 120 GB मशीन एंड उसमें मैं छोटे छोटे डिफरेंट वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ. ईच वर्चुअल मशीन विल बी हैविंग ओन खुद का रैम, खुद का CPU एंड खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम. तो काइंड ऑफ आइसोलेट कर देता है बाकी मशीनों से. तो अगर कुछ इशू होता भी है तो इट्स लॉक्ड under that particular VM. तो अभी ये हो गया है बातें करते करते. Now let's see. अभी सब बूट हो रहा है. In the mail you will get the password. Here is the mail. You get the detail of your Windows server. Now let's try to log in and let's use the IP. And let's add this machine and PC 54.190. Here is my machine. Connect. Your Windows machine is ready. It hardly took around 30 seconds or 35 seconds. Meanwhile, you have your coffee. Okay, so this is your machine. Now let's try to log out. Disconnect. And we are out from the machine. Similarly, if you want to destroy this machine, आपको simply अपने NetSpace India के panel में आना है. Now you can see you have 3 machines running. Destroying the machine is
as simple as just clicking here, click on delete. जैसे ही आप डिलीट करेंगे आपके आवरली बिलिंग स्टॉप हो जाएंगे. You don't have to worry, and that service gone. ठीक है. So that's it. So if you have any query, please feel free to comment, contact our support team from NetSpaceindia.com. Thank you for watching. Have a nice day.